आज हम लोग सार ज्ञान मंत्र में मूल कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हुए केमिकल रिएक्शन इन सॉल्यूशन, लिमिटिंग रिएजेंट और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के बारे में समझेंगे। इसके पहले वाले वीडियो मैंने आपको मोल्स के बारे में समझाया था, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टोइकियोमेट्री क्या होता है? व्हाट इज स्टोइकियोमेट्री? तो स्टोइकियोमेट्री जो है वो केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के मास या वॉल्यूम के कैलकुलेशन से डील होता है। कोई भी रिएक्शन में, केमिकल रिएक्शन में कितना रिएक्टेंट होगा, यूज होगा, कितना प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, उसे हम लोग स्टोइकियोमेट्री में कैलकुलेट करते हैं। एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन से हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है, जैसे कि उस रिएक्शन में कौन से रिएक्टेंट हैं, कौन से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, कितने मोल्स लेंगे, कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, कितना उसका वेट होगा या वॉल्यूम होगा। इन सब के बारे में हम लोग एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन से इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं, मीथेन का कंबशन। तो मीथेन का कंबशन में क्या होता है कि CH4 मीथेन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन होता है। तो इस रिएक्शन में मीथेन और ऑक्सीजन रिएक्टेंट्स हुए, प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोडक्ट हुआ। तो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है? तो पहला हो गया रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है। सेकेंड इंफॉर्मेशन है कि स्टेट क्या है। तो मीथेन का स्टेट यहाँ गैस, ऑक्सीजन भी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस एंड वाटर यहाँ वेपर फॉर्म में है, इसलिए गैस। अब स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है? जो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के जो कोफिशिएंट होते हैं, जो नंबर से इंडिकेट किया जाता है, उसे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बोलते हैं। मीथेन का यहाँ पे 1 है, ऑक्सीजन का 2, कार्बन डाइऑक्साइड का 1 और वाटर का 2 है। उसी तरह से अगर देखा जाए मॉलिक्यूल्स के लेवल में, अगर हम लोग देखें तो 1 मॉलिक्यूल मीथेन का कंबाइन कर रहा है कितने ऑक्सीजन से? 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन से। तो फॉर्मेशन हो रहा है 1 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड और 2 मॉलिक्यूल्स वाटर। सिमिलरली अगर मोल्स के रूप में अगर देखा जाए तो 1 मोल CH4 का 2 मोल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2 मोल वाटर का फॉर्मेशन होता है। वॉल्यूम अगर STP पे कंसीडर किया जाए तो हम लोग बोल सकते हैं कि 22.4 लीटर मीथेन कंबाइन कर रहा है 44.8 लीटर ऑक्सीजन के साथ, तो 22.4 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड और 44.8 लीटर वाटर वेपर का फॉर्मेशन हो रहा है। वेट का अगर कंसीडर करते हैं तो इस रिएक्शन से हम लोग ये बोल सकते हैं कि 16 ग्राम मीथेन 64 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड और 36 ग्राम वाटर का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे है 16 ग्राम कहाँ से है? तो हम लोग पिछला वीडियो में मोल कंसेप्ट के बारे में पढ़े थे कि 1 मोल जो होता है वो ग्राम एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास के इक्वल होता है। तो यहाँ मीथेन है CH4 1 कार्बन अगर 1 मोल का लिया जाए मीथेन का CH4 तो उसका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो 16 होता है। अगर उसको ग्राम में आप रिप्रेजेंट करेंगे तो 16 ग्राम।
तो 1 मोल मीथेन का वेट कितना होता है 16 ग्राम। उसी तरह से ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है। इस तरह से हम लोग एक केमिकल रिएक्शन, एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन से हम लोग रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, उसके स्टेट, उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, मॉलिक्यूल्स, मोल्स, वॉल्यूम एट एसटीपी, वेट एक्सेट्रा का इंफॉर्मेशन हम लोग गेन कर सकते हैं। और जस्ट इसके पहले हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं कि मोल अगर पता हो तो वेट पता हो जाएगा, वेट पता हो तो नंबर्स पता हो जाएगा। तो ये रिलेशन ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियो में मोल कंसेप्ट के अंतर्गत देखा है। और एक फॉर्मूला याद रखने के लिए रहता है कि डेंसिटी जो होता है वो इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो इस तरह से केमिकल रिएक्शन से हमें ये इंफॉर्मेशन प्राप्त होते हैं। अब हम लोग देखते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है? व्हाट इज लिमिटिंग रिएजेंट? तो लिमिटिंग रिएजेंट जो है, देखिए मेनी टाइम्स क्या होता है, रिएक्शन आर कैरिड आउट व्हेन रिएक्टेंट्स आर नॉट प्रेजेंट इन द अमाउंट एज रिक्वायर्ड बाय बैलेंस केमिकल रिएक्शन। जितना एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट की जरूरत होनी चाहिए उतना नहीं होता है। नहीं होने पे क्या होगा, रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। अगर जो अमाउंट कम अमाउंट में है तो फर्दर रिएक्शन नहीं होगा। तो उसे हम लोग वो रिएक्टेंट जो लेसर अमाउंट में रहता है एज पर बैलेंस केमिकल इक्वेशन देन द अदर रिएक्टेंट्स, then it will limit or it will control the reaction. In this situation, one reactant is access over the other, and that reactant is called limiting reagent. Now we can define limiting reagent as the reactant which gets consumed limits the amount of product formed in the chemical reaction is called limiting reagent. I will tell this by taking an examples, or you can take it as a problems, that 50 kg of 50 kg of N2 and 10 kg of H2 are mixed to produce NH3. Calculate the amount of NH3 formed. Identify the limiting reagent in the production of NH3 in this situation. Now the question is here, 50 kg N2 है, नाइट्रोजन है, 10 kg आपके पास हाइड्रोजन है, दोनों को मिलाकर आपको अमोनिया प्रोड्यूस किया जा रहा है। तो कितना अमाउंट अमोनिया प्रोड्यूस होगा वो कैलकुलेट करना है, और इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन है ये बताना है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखेंगे। तो बैलेंस केमिकल रिएक्शन N2 गैस फॉर्म में है प्लस 3H2 गैस फॉर्म and form 2NH3 गैस। इस रिएक्शन में हम लोग को हमें क्या इंफॉर्मेशन प्रॉब्लम्स में ऑलरेडी दिया हुआ है। तो 50 kg क्या है, N2 है, 10 kg क्या है, हाइड्रोजन है, अमोनिया का अमाउंट निकालना है, इसलिए क्वेश्चन मार्क्स है। जस्ट पहले हमने देखा है केमिकल रिएक्शन से जो इंफॉर्मेशन मिलते हैं वह इंफॉर्मेशन यहाँ हम लोग इंड्यूस कर सकते हैं। जैसे कि रिएक्शन देखने पे ये हमें इंफॉर्मेशन मिल रहा है कि 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करता है तो 2 मोल अमोनिया का फॉर्मेशन होता है। 2 मोल अमोनिया का फॉर्मेशन होता है। तो देखिए ये इंफॉर्मेशन है। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे,
अमोनिया का अमाउंट निकालना है, NH3 का अमाउंट निकालना है। दो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, एक जो है वो ऑलरेडी वो सेट है इन्फॉर्मेशन एज पर द रिएक्शन। तो देखिए बहुत इजी वे में देखिए कि 50 केजी 10 केजी कितना बनेगा NH3। तो सबसे पहले हम लोग ये पता करने की कोशिश करेंगे कि इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, मतलब कौन रिएक्टेंट जो है रिएक्शन का स्टॉप कर देगा अमाउंट रहते हुए, कौन एक दूसरे से ज्यादा है या कम है, इसका पता करते हैं। तो बिल्कुल सिंपल है कि सबसे पहले हम लोग, आप कोई भी निकाल सकते हैं, या N2 का अमाउंट निकालिए विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, या हाइड्रोजन का अमाउंट निकालिए विथ रिस्पेक्ट टू नाइट्रोजन। तो हम लोग यहां पे हाइड्रोजन का अमाउंट निकालने की कोशिश करेंगे। तो कैसे निकालेंगे, तो देखते हैं। 28 ग्राम नाइट्रोजन के लिए 6 ग्राम हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी, तो 34 ग्राम अमोनिया का फॉर्मेशन होगा। ये मॉलिक्यूलर वेट से हम लोग को यहाँ आइडिया मिला। तब चलिए देखते हैं अमोनिया के फॉर्मेशन के लिए 1 मोल या 28 ग्राम नाइट्रोजन के लिए कितना हाइड्रोजन की जरूरत होगी, 3 मोल्स या 6 ग्राम हाइड्रोजन। और 1 ग्राम 28 ग्राम के लिए 6 ग्राम, तो 1 ग्राम नाइट्रोजन के लिए कितना जरूरत होगा, तो 6/28। तो उसी तरह से 50,000 ग्राम, 50 केजी 50 केजी का मतलब 50,000 ग्राम नीड्स कितना, यूनिटरी मेथड से कैलकुलेशन करने के बाद हमें कितना मिलेगा, 10.714 केजी हाइड्रोजन। इट मीन्स 50 केजी नाइट्रोजन नीड्स 10.71 kg hydrogen, but we have only 10 kg of hydrogen. So the amount of hydrogen will be consumed early and stop the reaction before consuming the 50 kg of nitrogen in all amount. So here hydrogen will be the limiting reagent, because before consuming all nitrogen it will stop the reaction for the formation of NH3, because its amount is less than 10.714 kg, that is only 10 kg of hydrogen is present for the reaction. Then here we identify H2 is the limiting reagent. अब क्या करना है, now we will relate the amount of formation of NH3 with respect to the hydrogen. We will not take nitrogen because nitrogen is in excess amount. So we will consider the formation of NH3 with taking reference of hydrogen. For this just we use unitary method. As per reaction, 6 gram of hydrogen form 34 gram NH3, then 1 gram will form 34/6 gram and 10,000 gram, that is 10 kg of hydrogen will form 56.6 kg of NH3. So here simply we find the amount of NH3 formed is 56.66 kg. This is very easy calculation and we can easily find out the limiting reagent and also the amount of product NH3 formed here. Now we will see the concentration of solutions. So we can express
the concentration of solution or the amount of substance present in the given solution in the various way. For example, mass percent, mole fraction, molarity and molality. The first we see the mass percent. Mass percent, what is mass percent? Mass percent is equal to the mass of the solute into 100 divided by mass of solution. Now next, mole fraction. What is mole fraction? It is the ratio of the number of moles of a particular component to the total number of moles of the solution. Now if we consider two components in the solution A and B and their moles is Na and Nb, then the mole fraction of A is equal to number of mole of A divided by total moles of the solution. Can be represented as Na by Na plus Nb. Similarly, mole fraction of component B will be Nb divided by Na plus Nb. This is the mole fraction. It is the ratio of the number of moles of a particular component to the total number of moles of the solution. Now, molarity. What is molarity? The number of moles of the solute in 1 liter of the solution. That is, molarity is equal to number of mole of solute divided by the volume of solution in liter. That can be extended as W by M into 1000 divided by volume in milliliter. Similarly, molality. Molality is the number of moles of solute in 1 kg of solvent. In the above molarity, the 1 liter of solution, but here in 1 kg of solvent. So, molarity, here molality is written as molality, molality, L, R not L. Number of moles of solute divided by mass of solvent in kg. That can be extended the formula W by M into 1000, weight of the solvent in gram. Now we will see the problem. Prepare 0.2 m solution from 1 m solution of NaOH, sodium hydroxide. तो सबसे पहले we have to understand, for solving this problem, the meaning of 0.2 m and 1 m. 1 m of 1 m solution of NaOH means 1 mole of NaOH present in 1 liter of solution. Similarly, 0.2 m NaOH means 0.2 mole NaOH present in 1 liter of solution. Then, as we know, in solution, solute is uniformly distributed over the solution. So, just using unitary method to calculate the amount for 0.2 mole NaOH in what amount of the solution.
Then here is the simple calculation. 1 mole of NaOH present in 1 liter or 1000 milliliter solution. Therefore, 0.2 mole of NaOH present in 200 milliliter of solution. Clearly, to make 0.2 m solution, we will add enough amount of water, that is here 800 milliliter, to make it 1 liter of solution, and the solution became 0.2 m NaOH. For this, we also use a general formula M1 V1 is equal to M2 V2 for calculating the volume that we needed to make the desired concentration of the solution. Here, for this case, M1 is 0.2 m, V1 is 1000 milliliter, M2 1 m, and we have to find V2. After calculation, we get V2 is equal to 200 milliliter. Simply here we can prepare the solution of different concentration using a solution of a given concentration. Now we will see the next problem. Problem number 3. Calcium carbonate react with aqueous HCl to give CaCl2 and CO2. According to the reaction, calcium carbonate plus 2HCl form CaCl2 plus CO2 plus H2O. What mass of CaCO3 is required to react completely with 25 ml of 0.75 m HCl? First of all, any problem is given, then look at the problems and find out the identity that you have to find and what is the given information in the problem and relate them. Consider first of all, write this equation, and we see here CaCO3 plus 2HCl form CaCl2 plus CO2, and given here question mark on CaCO3, that is the here in question we have to find out the mass of the calcium carbonate required, and amount of detail of HCl is given 25 milliliter of 0.75 m, that is concentration of the HCl is given. And what we will take the step to solve out this problem? Very simple. Relate this first of all, find out the moles of water, moles of HCl, and then find out the moles of calcium carbonate CaCO3, and after getting the moles of CaCO3, we will find easily mass of the calcium carbonate. As per this reaction, we can easily relate 1 mole of calcium carbonate required 2 mole of HCl for the formation of 1 mole of calcium chloride and 1 mole of carbon dioxide. Now molarity of HCl here is given, number of mole of HCl into 1000 divided by volume in milliliter, and putting the value we get the number of mole of HCl. Here molarity is already given, and we also know about the volume, that is 25 ml. Then easily find out the number of mole of HCl, that will be equal to 0.01875
moles by the calculation. And now, as per reaction, 2 mole of HCl completely react with 1 mole of calcium carbonate. Then find out 0.01875 mole of HCl completely required. Kitna, how much moles of CaCO2? That is 0.09375 mole of calcium carbonate. Here we already find out the number of moles of calcium carbonate. Then if we have a number of moles and the molecular weight of calcium carbonate, that is 100, then we can easily find out the mass of the calcium carbonate, that is equal to number of moles of calcium carbonate into molecular mass of calcium carbonate, which is calculated as per here and get 0.937 gram mass of calcium carbonate. So 0.937 gram CaCO3 is required to react completely with 25 milliliter of 0.75 mSCl. Now we see the next problem. Calculate the molarity of solution of ethanol in water in which the mole fraction of ethanol is 0.040. Assume the density of water to be 1. Very easy. Here the mole fraction of the ethanol is given 0.040, and we know that total mole, if total mole fraction of all the component will be added, we will get the 1. And find out the mole fraction of water and number of moles of water in 1 liter volume of the water. Two things we have to find out for this calculation: the amount of that is the molarity of the solution. Then find out the number of mole of H2 in 1 liter. As we know that density is taken to be 1, that is 1,000 milliliter volume of water has 1000 gram weight. So number of mole of H2 in 1 liter will be weight of the water and the molecular mass. Weight 1 liter वाटर का वेट जो है वो कितना होगा 1000 ग्राम. मोलिकुलर मास कितना होता है 18. आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस वी विल गेट 55.55 मोल. In this solution water has 55.55 moles. Now calculate the mole fraction of water. That we will find out 1 minus 0.040, that we will get 0.96 mole fraction of water. Now relate this mole fraction to the mole that we will get from the calculation. Now since 0.96 mole of H2 present in 1 mole of solution, then water here 55.55 moles. Then what amount of moles of the solution? That can be easily get 57.86 mole of solution. And then the amount of ethanol in the solution will be 57.86 minus number of mole of water, that is 55.55. That will become 2.32 moles. It means
2.32 moles of ethanol is present in the solution. So the molarity will be 2.32 moles divided by 1 liter, that is volume is 1 liter, that will be come 2.32 m will be the molarity of the solution of ethanol in water. Here we have understand about the information from the balanced chemical reactions and concentration of the solution and some problems related with this. So if you like this video, please like and subscribe, and thank you for seeing this video.